अनफॉर्चुनेटली अभी ये क्लोज है, हम आगे नहीं जा सकते इसके। Hey guys, good morning. This is Gaurav and she's Karla. Welcome to our YouTube channel Travel and Tech. So guys, आज संडे है और हम आ चुके हैं फिर से हाईवे पे। आप देख सकते हो हाईवे पीछे, ये जो हाईवे है जामनगर रोड। और आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है बहुत ही खास। आपको बहुत ही मज़ा आएगा आज के व्लॉग में, क्योंकि मैं इसको कुछ नई नई चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ मैं जा रहा हूँ आज नरारा आइलैंड। नरारा आइलैंड जो है राजकोट से आई थिंक 150 किलोमीटर्स पड़ता है जामनगर की साइड पे। यहाँ से जामनगर है 100 किलोमीटर्स और वहाँ से 40 या 45 किलोमीटर्स पड़ता है नरारा आइलैंड। वहाँ पे देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको वहीं पे जाके बताता हूँ। सो चलिए अभी चलते हैं बैक टू हाईवे और आपको दिखाते हैं नरारा आइलैंड। सो चलिए गाइस। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जामनगर और हमने करीबन 100 किलोमीटर ड्राइव कर लिया यहाँ पे। आप देख सकते हो पीछे जामनगर हाईवे और यहाँ से जो अभी बचा है 50 किलोमीटर। और ये जो रोड है डायरेक्टली जाता है जामनगर में, बट आपको जामनगर अंदर नहीं जाना है, आपको जाना है यहाँ से बाईपास। मेरे पीछे जो ये रेस्टोरेंट देख रहे हो, हम वहीं पे रुके नाश्ता करने के लिए। अभी हम करेंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट। आप देख सकते हो गाठिया, थेपला एंड ऑल। What is that? Noodles. Philippine noodles. Okay. So we will do breakfast here and then we will move to where we are going, Karla? The beach. I don't Yeah, Narara beach. Sorry. करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं नरारा आइलैंड की ओर गाइस। तो चलिए। In India, potato fries are all natural because freshly cut potatoes. It's not. I think they did not preserve this one, right? I'm a foodie person. It can show in my body. Build. My pisek. Let's eat gacha also.